दोस्तों, दिस इज सिमरजीत सिंह बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ द कोच ऑन कैंपस सीरीज, जिसमें हम हैशटैग कोच ऑन कैंपस यूज कर रहे हैं. इट्स अ नेशन वाइड कैंपेन which we have designed to take out information जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और अलग अलग जगह से मैंने पिछले 11 साल में अपने जीवन के एक्सपीरियंस से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ कॉर्पोरेट कोच, एज अ लाइफ कोच, एज अ यूथ स्पीकर जो मैंने इकट्ठा करके मैंने ये महसूस किया कि ये इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट बोर्डरूम से निकाल कर इसको हमें यंगस्टर्स तक भी लेके जाना है. मेरा मानना है दोस्तों, इवन इफ एट द राइट एज, एट द राइट टाइम, इफ वी आर एबल टू क्रिएट अ 1 degree shift, just a 1 degree shift in a youngster's life, the impact of that thing is going to be huge, is going to be phenomenal. और यही चीज़ हमें मोटिवेशन देती है इस प्रोग्राम को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में ले जाकर. तो अलग अलग जगह हमने जो फर्स्ट अटेम्प्ट की थी कोच ऑन कैंपस की, दैट वाज एट GNA यूनिवर्सिटी, एंड एवरीबडी ऑन यूट्यूब, you guys received it with so much love and enthusiasm that हमें ये और मोटिवेशन आई है कि इसको और स्टूडेंट्स तक लेके जाएं. कोच ऑन कैंपस के जो लाइव प्रोग्राम्स में कुछ सवाल ऐसे यंगस्टर्स के होते हैं जो उस समय ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और ड्यू टू अदर रीजंस नहीं आंसर किए जा सकते. सो आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ बैकअप सीरीज हियर इन द स्टूडियो सो दैट वी कैन आंसर क्वेश्चंस व्हिच कुड नॉट बी एड्रेस्ड और व्हिच कुड नॉट बी एड्रेस्ड फुली इन द campuses itself, right? If your school or college also wants to host a coach on campus program, all you have to do is send us an email on this email ID, which is dubai@simarjeetsingh.com. I repeat, Dubai, DUBAI @simarjeetsingh.com. Please use the hashtag in the subject line, hashtag coach on campus. Write to us and we'll find the best way so that I can visit your campus as well and answer the queries of the students there. So let's start with the question that was posed to me recently about career choices. दोस्तों, ये सवाल करियर चॉइसेस के ऊपर है और मेरा मानना है कि इंडियन इकोनॉमी क्योंकि इस तरह से चेंज हो रही है, काफ़ी बदलाव आ रहा है, सो मेनी न्यू ऑप्शंस आर देयर. आई वाज जस्ट रीडिंग दैट द टॉप 10 jobs right now, the top 10 high demand jobs in 2019 or 2020 did not even exist 10 years ago. New jobs such as in e-commerce or artificial intelligence or big data, data analytics, graphic designing, search engine optimization. There are so many new avenues that have opened up. Stand-up comedian, motivational speaker, life coaches, health and fitness में कितनी options हैं. This economy has exploded with so many new options. The number of restaurants, if you see in tier 2, tier 3 cities, or even in tier 1, we already had that in India. मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी, बट अब टीयर 2 सिटीज़ में आप देख रहे हैं there's a rapid explosion of choices everywhere. You know, right from I remember when we used to need a protein shake or a good protein powder maybe 10 years ago. या तो वो US से किसी आने वाले फ्रेंड से मंगाते थे या कहीं और से लेते थे, या शहर में एक केमिस्ट शॉप होती थी जिससे वो मिलता था. And now you will see that there are exclusive stores जहाँ सिर्फ health and nutrition का सामान मिल रहा है. Such has this country changed. With it has brought so many new options for youngsters. So let's talk about making the right career choices. The question that was posed to me was, so how can I make the right career choices and select the right option for me? And number 2, so I'll answer both these questions together. How can I avoid negative thoughts about my career? So number 1 is how can I make the right choices? And at the same time, if I'm having some apprehensions or doubts या मेरे मन में शंकाएं हैं या negative feeling हो रही है अपने career choices को लेके, how do I overcome that? So let me start by addressing the first one. It's very, very important that if you're in 10th or 10+1 or 10+2 or even if you're at your first job, it's very important, ये अहम है आप याद रखें, that your career path will unfold as you move forward. आपका career journey जो है, ये जैसे जैसे आप कदम आके बढ़ाते जाएंगे, ये change होने वाली है. It's going to be dynamic. You will change jobs. You may even change your profession altogether. You may do a master's degree in an entirely new field. You may reinvent yourself. So काफ़ी संभावनाएं हैं. So सबसे पहले अगर आप अपने जीवन में करियर को लेकर सुकून चाहते हैं तो प्लीज़ ड्रॉप दिस एक्सपेक्टेशन कि सर आज मैं 10th में हूँ या 10+1 में हूँ या 10+2 में हूँ या फर्स्ट जॉब में हूँ और मुझे आज यहाँ से लेकर आज से 10 साल आगे क्रिस्टल क्लियर नज़र आना चाहिए मेरा करियर कैसे होगा.
ये एक्सपेक्टेशन बड़ी अनरियलिस्टिक है. इट्स नॉट गोइंग टू बी मेट एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इनसाइड यू बिकॉज यू आर लिविंग इन अ चेंजिंग इकोनॉमी. यू आर अ डायनामिक ह्यूमन बीइंग. जैसे आपका इंटेलेक्ट ग्रो करेगा, आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस ग्रो करेगा, जैसे आप ज़्यादा दुनिया को देखेंगे, ज़्यादा अनुभव पाएंगे, आपके मन में नई संभावनाएं आएंगी, न्यू पॉसिबिलिटीज विल इमर्ज एंड अकॉर्डिंगली अ लॉट ऑफ चेंजेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड. सो यू हैव टू गो विद द फ्लो and all you need to take care of is the first 2 or 3, 4 steps, you know. Just remember this, when you were a kid, बचपन में आप सब ने वो गेम खेली होगी, joining the dots, connecting the dots. और अगर वो नहीं खेली तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, you need to go back into your childhood and do that again. That's such a fun activity, joining the dots. किसी बच्चे को उस एक्टिविटी में टेंशन नहीं हुई होगी कि मुझे पूरी पिक्चर पहले नजर आए, मैं फिर पहली 2 डॉट्स ज्वाइन करना शुरू करूंगा. That's not how kids play that game, you know. You just have fun joining the dots. ठीक है, आपको एक आइडिया है कि मुझे ब्रॉड किस डायरेक्शन में जाना है, and you enjoy connecting one dot to another, and that's what I'm requesting you to do. If you're in grade 10th right now, enjoy and fully put all your efforts in connecting that dot with 10 plus 1, then with 10 plus 2. Then a major change will come in depending upon which bachelor's degree you do. So the dots will connect and eventually a big picture will come in. But अगर आप ये सोच के बैठें कि मुझे आज ही पहले big picture नजर आए, उसके बाद मैं कुछ करूंगा, that's an unrealistic expectation. The next thing I want you to keep in mind is something called the power of continuous course correction. Just like, on a typical flight path, if a plane has taken off in New Delhi and let's say it is bound for New York, नई दिल्ली से एक प्लेन अभी टेक ऑफ किया है और उसका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है दैट इज न्यूयॉर्क. एंड लेट्स अज्यूम दिस इज अ 14-15 आवर नॉन स्टॉप फ्लाइट. पायलट के दिमाग में एक कोर्स है कि उसको कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है. ही हैज अ मैप इन प्लेस एंड ही हैज प्लॉटेड अ कोर्स. बट लेट्स से जस्ट एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ इट्स 1 डिग्री ऑफ, राइट, जस्ट 1 डिग्री ऑफ. दिल्ली में अभी टेक ऑफ हुआ है, सिर्फ 1 डिग्री अपनी डेस्टिनेशन, अपनी पाथ से वो परे है. उस समय उसको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला. बट अगर वो कोर्स करेक्शन नहीं प्रैक्टिस करता है, if the pilot does not bring the plane back onto the charted course, he is going to go off course as the hours goes by. दूसरे घंटे में वो जो 1 डिग्री का गैप है, अगर आप मेरी बात को समझे तो वो 1 डिग्री का गैप है, अब वो थोड़ा थोड़ा और बढ़ता जा रहा है. सेकेंड आवर में वो और बढ़ गया, थर्ड आवर में वो और अपने ओरिजिनल कोर्स से परे हो गया. 15-16 आवर में जब तक उसको न्यूयॉर्क में लैंड करना था, अब वो 1 डिग्री का गैप काफी बढ़ चुका है और JFK एयरपोर्ट की बजाय, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की बजाय, अब वो प्लेन साउथ अमेरिका में, साओ पालो ब्राजील में कहीं इतनी दूर जाके लैंड करेगा. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस कंटिन्यूस कोर्स करेक्शन, विच मीन्स दैट यू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, you keep experimenting, you keep exploring, you keep stepping forward, and when you feel the results are not in harmony with your inner self, when you feel some internal disturbance, you practice course correction. What I mean by that is कि अगर आपको ये लगे ये मैं जो कर रहा हूँ, अगर ये मेरी इंटरनल सेल्फ से, मेरी नेचुरल बॉर्न टैलेंट से मैच नहीं कर रहा, what are the changes I need to incorporate? If you're a student, what are the changes I need to incorporate in my subjects in order to experience that joy? If you're a working professional, what are the changes I need to incorporate in my job profile so I can make that change? So this continuous course correction must be practiced. For whoever wants to explore their dream career, I want you to focus on 2 or 3 things. Number 1, discover your strengths. What are you really good at? कोई शख्स इस प्लैनेट पे नहीं है जिसके पास कुछ यूनिक चीज नहीं है देने के लिए. आपके पास भी है, मेरे पास भी है. We all have a unique gift, if we may call it that. We all have a unique responsibility also. जहाँ gift है वहाँ responsibility भी है. And this is a process which you will not be able to do it in one instant just by watching this video or reading a book. It's a constant search. What are my strengths? 2 या 3 पैरामीटर्स मैं हमेशा समझता हूँ जब भी हम नेचुरल स्ट्रेंथ की बात करते हैं. They come to you effortlessly, number 1. Right? आपको ज़्यादा लर्निंग में इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना पड़ता. Your strength is something that comes to you effortlessly. Number 2, you enjoy using your strengths, right? Once you, let's say if you're a sports person, if you're very good at cricket, और आपकी natural strength है, batting is your natural strength, आप उस चीज को इतना enjoy करेंगे, and once you play that game, it's not like it's hard work, it's not like it's a punishment. And the number 3 correlated factor is when you are using your strength,
time stops for you. So आपके लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इन 3 पैरामीटर्स को मैच करती है, which is coming to you effortlessly, which you enjoy doing, and number 3, while doing that activity, time stops for you, right? If you do this little exploration, chances are you will discover your strengths. I may suggest a test here. It is called the Gallup's Strength Finder test, which I took myself personally. It's, I think, $10 or something. I'm not being paid to promote that, but I do feel it's a very valuable resource. मैंने उसको personally भी use किया है. Gallup, that's spelled as Gallup, Gallup Strengths Test. If you go online, they have this test and they come up with 5 strength themes. What are you really good at? And that'll give you an idea. That will sort of be like a reinforcement for you. What is the career path I should choose? Because your subconscious already knows what your strengths are, but once you have it validated by a test, you feel all the more confident to go and pursue it. So we've already covered the sort of the parameters of what a strength might be. It is natural, it comes effortlessly, and it takes you into a flow state, that is, time stops for you. The next thing you have to now focus on in discovering the right career choices is, how can you take your strengths to solve real-world problems? How can you take your natural strengths, discover your strengths, and you can solve real-world issues, real-world problems? That is when this right intersection is going to happen. Your strengths are now being put to good use. I was once asked by a young student, what are your opinions about money? How can I make more money? And my answer is this: money is a reward that you get for solving the problems of other people. Money is a reward that you get by solving the problems that exist in the economy. पैसा वो reward है जो हमें तब मिलता है जब हम दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. और दोस्तों, मेरा मानना है जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं उतने ज्यादा पैसे भी हम बना सकते हैं. बट पैसा उद्देश्य नहीं है, बट यू गॉट टू मेक श्योर दैट आपकी स्ट्रेंथ्स किसी बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करें, राइट? बिग और स्मॉल. एंड इफ यू कैन कनेक्ट दीज टू, राइट? लेट अस से you have a strength of cracking jokes and making people laugh. The problem you can solve is helping people overcome depression. Let us say you have a natural strength to challenge people and ask them, उठो यार, क्या हुआ है, तुम इतने मायूस क्यों हुए हो? You probably have a strength, you're solving a problem of demotivated people. You probably have the opportunity of being a motivational speaker. Let us say you have a strength, आप बड़े effortlessly किसी subject को explain कर लेते हो, ऐसे examples लेके, ऐसे ढंग लेके कि सुनने वाले को बखूबी समझ आ जाता है. सारे students आपके जो classmates हैं आपके पास आते हैं समझने के लिए. You have a natural talent of being a teacher. You have a strength, you're being able to solve a real world problem. So please make sure that you're doing these two things simultaneously. Discovering what you're good at and also finding out how can I solve real world problems with it. But discovery should be the first part. The joy of doing it should be the first part. Problems खुद ब खुद solve होने का second part में आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा. I encourage you to do the first part first. Exploratory process, like Mark Zuckerberg exploring how to write code, like Bill Gates when he first time he saw that computer learning how to write code, like Dhirubhai Ambani, उनमें नेचुरल स्ट्रेंथ थी कि अपॉर्चुनिटी देखी और उसको ग्रैब कर लिया, चाहे वो पकोड़े बेचने की क्यों ना हो. और शायद काफ़ी यंगस्टर्स को मैं इस चीज़ से वाकिफ़ करा दूं कि माउंट गिरनार पे, जो गिरनार मंदिर पे सबसे पहले जो धीरूभाई अंबानी की फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर था, वहाँ भजिया बेचना था, पकोड़े बेचना था. दिस इज़ व्हाट ही डिड टू स्टार्ट हिज जर्नी. सो द एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस इज समथिंग फॉर यू टू फाइंड आउट व्हाट एम आई गुड एट एंड हाउ कैन आई यूज इट इन द रियल वर्ल्ड. लेट अस नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. How can I avoid negative thoughts about my career?